she thinks the holy grail that you will say? So if you're starting with the Hello VRC everyone, section, welcome back to my YouTube channel. Today we have a very special guest with us, a very dear friend I would say, Anwesha here. So I met her for the first time in my hi. Cozy Code interview, and she has converted IIM Bangalore. She has converted a few more colleges, and we'll talk about everything. Also, she is a serial 99 percentiler. तो ये इसलिए जरूरी था क्योंकि मॉक इंटरव्यू शुरू हो चुका है, नहीं मॉक सीजन शुरू हो चुका है, and now people are stressing over the VARC scores like I used to stress, and a student perspective is necessary. So hi Anwesha. Hi Hemant. Hi everyone. Yeah. Just wanted to correct. I'm a serial 99 percentiler in VRC section only, and that has been my strength all the time. So, okay, we will go into VARC for sure, but tell me, how are you feeling converting all the colleges and the percentile that you got? Yeah, it was really, I tried a lot this year for CAT, and I was sure like with 2.5 years work ex, I will be landing somewhere good. I have had I've been fortunate with a good like academic scores in the past, but like it's still, you never know, like till the moment you have the convert in your hand, you never know how are the interviews for you. So yeah, I feel really great. Like I converted almost every college that I sat for this year. Like from going from not converting anything to everything, this has been a really beautiful journey. I can relate to you, and you are honest enough to say कि अभी भी कोई convert बाकी है after converting IIM Bangalore. So let's hope for the best. But ठीक है. So have you taken CAT before, or this is the first time you have taken CAT? Yeah, like my journey with CAT began in my last year of college, that is 2019, when I was aware of the exam, and I just took it like for sport, and because of being like having a good academic background, and being like we have a +5 marks for gender. So I was fortunate to get a call from IIM Kozhikode during that time, but I wasn't able to convert it because I wasn't ready. For an MBA that time, my interviewer also gave me the feedback at the moment only, that you must read and you must understand what is an MBA before thinking about it. And then I just took it like every year. It was just a routine, and last time I prepared seriously for it. So I can say this is my first serious attempt in CAT. But I've been always fortunate with a good VRC score. Like DILR has been my weakness, and my strength has always been VRC. Okay, one quick question. अगर कोई कोड हो जाता उस समय, so would you have taken it or you would have dropped it? Yeah, without any question, I would have taken it, because I had always in mind that I'm not suitable for an IT job. Like I'm a computer science engineering graduate, so I had a job in my hand, but I felt like I'm not ready to like do a job right now. I want to study. I want to go into MBA line, but things were planned differently for me. So I had a work experience of 2.5 years, and now I'm here. And do you feel fortunate that IIM Kozhikode didn't happen and now you are landing up in IIM Bangalore probably? Yeah, I really feel great, but the journey was really difficult, like dealing with rejections to leave a mark on you. So that experience, I feel like I'm happy that happened. That humbling experience happened in my life that taught me a lot of lessons. So character growth was really great. चलो wonderful. तो कहानी तो बढ़िया है, story book worthy कहानी है, but from this will come VRC, and VRC has always been your strength. So and you told कि जब तुमने seriously prepare नहीं किया था तो भी VRC में 99 आ जा रहे थे. So is it because you were good previously in reading, you had an habit of reading, या क्या था पहले से VRC में? And also please tell कि अगर ऐसा किसी के नहीं है तो can they develop it in this 6 months? Because if I am asking you who is naturally good at VRC, so I'm not sure how much it will impact someone who is not good. Yeah, I understand your question. So I will start with the very cliched thing everyone talks. CAT is an exam of your past deeds. Like तुम्हारे academic profile देखते हैं, तुम्हारे like तुम्हारा कितना concepts clear है, like 12th और 10th के maths का, like if you had taken those subjects, वो सब बहुत काम में आता है. And the biggest past deed is how much have you read. Read means किन का reading habit होता है. They don't read newspapers. They just randomly browse the internet, वो Quora में कुछ पढ़ेंगे, they read articles on Eon or anything that interests them. Somebody shares a WhatsApp link to them, they just open and browse the
like Times of India देख लिया online में, कुछ भी पढ़ना है. So reading habit was something that was my past need. I was always I like identify as an introvert, so my way of releasing my emotions and energy was to reading and writing. So that is why I like it was really good for me. That helped me. But someone who is looking at developing VRC in the next 6 months, I can give you a very good example. Like last year ke cat और this year ke cat के बीच में, I hadn't read a lot. I was working exhaustively. I was working day and night, and I had lost every reading practice. And my first few mocks, मेरे quants and DILR अच्छे हो रहे थे. My VRC was dropping. Oh my So God. that's when I realized कि I must not play it very cool. Like मेरा strength, मेरा weakness भी बन सकता है, मतलब cat D-Day को जाके. So then what I did was I went back to my basics. I started reading books. I knew that I have limitation of time. I also started preparing around May, June only. So I decided I'll just pick out a simple book, one book per month, 20 to 25 pages minimum. Of course, there were days when I used to only read 10 pages. Initially, difficulty होता है reading speed लेने के लिए. Definitely. तो वो मतलब मैंने वो हैबिट करा एंड आई जस्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग अबाउट इट कि मैंने ये बुक इस मंथ पढ़ा तो आई कैन स्टे अकाउंटेबल विद इट. मैं गुड रीड्स में आई ओपनड अ प्रोफाइल एंड टुक अ रीडिंग चैलेंज एज वेल. सो दीज स्मॉल अकाउंटेबिलिटी स्टेप्स हेल्प्स यू overcome some like sprints of procrastination or something like that in your life. And but matlab reading actually opens up your brain for inference based questions in RCs. And ho jata hai. It's magic for VRC. Reading is really great. So if you have any other question. So basically, would you say if a person uh, can do only one thing to improve their VRC, would it be wrong to say it is reading? No, it will never be wrong. Like there are, and one thing, get uncomfortable now. Like abhi tum, agar you go to uncharted territories, if you go to those places where you haven't been, like I was more like it was very easy for me to understand technical subjects like computer science, IoT ho, AI ho, ये सब articles मेरे लिए बहुत easy होता है पढ़ने के लिए, given my background. But when philosophy comes, when literature comes, it's difficult. So pick out those topics only and start reading. Like जो topics में तुम uncomfortable हो, start to read more of them right now. Abhi first 3 months, there are several sites like Harvard Business Review, Aeon, Economic Times, wherever you find any article, just read things that you're not comfortable with. So this will help you. I have a bit of contrary views with regard to reading. मैंने भी reading किया, काफी reading किया, but I do not say it is the holy grail कि भाई उसको पढ़ने से सब हो जाएगा. Now, reading did help me to get some stamina and expand my knowledge base, but it did not exactly help me in my critical reasoning part. So, मेरा क्या था, मैं just reading करके next article. Okay. So, is there anything different that you did कि तुमने पहले reading किया, फिर उसका कोई critical analysis किया, हो सकता है जो मैंने miss किया हो. So, is reading the only thing, और after reading also कुछ procedure है जो लोग miss out कर जाते हैं, जो मैंने भी किया था. So, like we can address it by looking at the type of passages that comes generally in CAT. Sometimes they are inserts of some story that have been continued, और तुमको refer करना होता है कि where it started and where it is going to, because intro and the continuing parts नहीं होता है. Or sometimes, most of the time, it's a newspaper clipping or some article written by someone. So all of these actually require you to understand कि वो क्या है. मतलब without any head or tail, you need to understand कि वो क्यों है, मतलब why was this passage written, or why are these 500 words written. So all of this only comes when you read and analyze it. As you said, reading is good, then quality of content you have to sort it with whatever genres you are not comfortable with, you have to pick it. Then is the type of reading you are doing. Like you have to understand why these sentences are written. There are so many literary devices and everything. Like wrapping your head around what is a metaphor or a simile at this time can be very difficult. Like abhi 6 months is left, but you should generally have this basic understanding ki why are these sentences connected to each other. So basically you are saying that if a person is reading, they should develop the capability where they know either this is a new paragraph or this is being continued, and what kind of storyline it is put in front of you, right? क्या story बनने वाला है, मैं क्या पूछ सकते हैं. Yeah. Right. So like understanding like why this 500 like
words are written on the page. Like some time back it came, like जॉर्ज ऑरवेल का 1918, like that book came up, वहाँ का कुछ आया था, या फिर एनिमल फार्म आया था. सो इफ यू आर acquainted with those type of writings, तुम्हारे लिए easy हो जाएगा. या फिर बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पता है, जीडीपी ये सब मतलब jargons एंड ऑल फॉर अस. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड दीज वर jargons फॉर मी. सो ये सब का मतलब मुझे मतलब पता है तो मैं आराम से वो पैसेज समझ जाऊंगी. एंड देन इज तुमने जैसे बोला है कि तुम पढ़ो एवरीथिंग यू रीड, बट इनिशियली यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट, बट थोड़ा सोच सोच के पढ़ने की कोशिश करना. रीडिंग अलोन won't help you, but reading accompanied by understanding the passage, and otherwise you can do the reading practice of RCs only. Different type के RCs ले लो, वो पढ़ो पहले, like just read it like an article, understand it, and फिर मतलब attempt करने की कोशिश करो. Cool. So basically, this is what I missed. कि critical reasoning तो करना है. You हाँ cannot मतलब analysis is read very that. important. Analysis is Yeah. important even of a newsletter if you read, or even if a piece of news you read, you should do the analysis, right? And to tell name of a few books, as you told, Animal Farm. So you said that you were not very comfortable with different genres. So what are the books that you read to get comfortable? For example, for philosophy, I think I read Sophie's World. Okay. It kind of helped. So is there Yeah. anything that book recommendations that you will say people to read? See, first of all, jab, whenever you don't have reading practice, I will never recommend you to start with a very difficult book. Like 2021 December, I actually thought about starting to read. Like मुझे लेना है, मतलब ये challenge लेना है 2022 के लिए. I will read minimum 15 to 16 books this year. So I started with a very normal, like fictional rom-com type का book, romantic comedy type का book, and it helped me. Like मुझे interest आया वो पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ लिया. But at the end of the day, I was like 300 pages I had read like within 2 to 3 days. So it was a very good way to get up to the speed. It was a good push. So initially, when you are not haven't read from a long time, start with something comfortable. Then gradually तुम अपने books का level तुम online research and all से देख लो. I'll recommend some books like Atomic Habits, Tuesdays with Maury, and like Shoe Dog by Phil Knight. These books are really written in simple language, but with great messages. And these books will help you to like pick up the speed. फिर you can go to difficult territories. I'll agree. These three books, one of my favorite books as well. In fact, ये Phil Knight का जो Shoe Dog है, Shoe Dog, yeah. one of the best books I ever read. One of Yeah. the best, I would say, auto business books I would say ever read. Yeah. So, but I think the discussion we should make it in two parts. One is for people who have started back, जो लोग दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में शुरू कर दिए थे, and then one is for people who are starting now, because obviously the approach for both of them will be different, and I think it is important to address both of them, right? So Yeah, of course. you take your time and first tell what should be the approach from start to end for people who have started in January. What should they focus on right now? When should they start the mocks? What is the strategy they should build on? Should they read more or not? And how they should bifurcate their time. You can also add a tinge of your वर्केक्स वाला थिंग कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा उनको हेल्प हो जाए. And obviously freshers can always push the limit, so they will add those extra hours as per their convenience. Of course. So for the people who have started earlier in CAT, by this time you should be like taking some sectional tests, and alternate weekend में mocks लेना जरूरी है. Because I believe 30 to 40% of the syllabus should have been completed if you would have started by December or January. It has been like 7 to 8 months done completely. Right. So तो अभी alternate weeks में mocks लेना शुरू करो and spend much more time than you take to take the mock. Like 3 to 4 hours you invest in it to analyze the mock and understand where you are lacking. And never wait till your syllabus gets completed, then तभी मैं mock देना शुरू करूंगी. कभी CAT में कभी syllabus complete नहीं होता है. You are always presented with different things till the penultimate day. And then for VRC specific preparation, I can give you an example. I and my friend, we started preparing for CAT last year. I was someone who had her past deed of studying and reading and everything sorted, and वो start कर रहा था. He was a DILR genius, but he was always unable to clear the cutoff of VRs.
सो हमने एक एक्सेल अकाउंटेबिलिटी शीट बनाई. आई वाज हेल्पिंग हिम विद वीआरसी. सो एवरी डे वी यूज टू असाइन ईच अदर एऑन के आर्टिकल्स. लाइक एऑन में इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट इट हैज डिफरेंट सेक्शंस और द कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल, फिलोसफी, साइंस, Right. लाइक बायोलॉजी एंड सब सेक्शंस एंड ऑल. उसका बहुत अच्छा है. तो वी यूज टू पिक आउट डेज ऑफ द वीक डेडिकेटेड टू ईच जॉनरे, एंड हम वो पढ़ते थे. एंड एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे, हम दोनों डिस्कस करते थे कि ये पैसेज में हमको ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा. एंड ही यूज टू एक्सप्लेन मी दैट पैसेज सो दैट मुझे वो रीड ना करना पड़े, एंड आई यूज टू एक्सप्लेन हिम दैट पैसेज सो दैट उसे वो और कभी पढ़ना ना पड़े. Just something that you will take behind. So that exercise really helped us both, and it's just 15 minutes exercise. तुम पढ़ के एक वॉइस नोट भी भेज दो अपने दोस्त को. मैं सोते समय ईयरफोन्स दे के वो सुन के मेरे को भी नया इन्फॉर्मेशन मिल गया आज के लिए, मैं सो जाऊंगी. सो दिस रियली हेल्प्ड अस. एंड मैंने मतलब वी बिल्ट अ वेरी बिग एक्सेल. और मैं उसमें साइड बाय साइड आई यूज टू ट्रैक सम न्यू वर्ड्स. जो Right. मतलब कुछ नया वर्ड मैंने देख लिया आर्टिकल में, मुझे पता नहीं चला, तो मैं ऐसे खाली वर्ड्स को लिखते जा रही थी. आई वॉज नॉट इवन लाइक टेकिंग आउट टाइम एंड लाइक राइटिंग द मीनिंग. तो एक दिन हम संडे को बैठे, सारे वर्ड्स का मीनिंग हमने देख लिया. Mm-hmm. सो ऑल दीज स्मॉल So, स्मॉल एक्टिविटीज विल हेल्प यू. so, if you don't mind, can you share how much did your friend eventually scored in VRC? Like, was he able to clear the cutoff? Yeah, he was able to clear the cutoff. It was he scored pretty well, given he was unable to clear the cutoff last time. So it was around 96 percentile in VRC. It was quite good, like a Def- jump for him. Yeah. Definitely. So, that is all for freshers. So, maybe if I have to write down points, you will say read different, Hmm. form a group, accountability group, start taking Hmm. sectionals and mocks every alternate weekend. Hmm. Since your 30, 40, 50% of the syllabus is completed and syllabus खत्म होने का wait मत करो. मत करो. Yeah. And anything extra you would like to add? Were there any extra courses you took or anything, where did you Hmm. practice from is one of the question that came to me. कि कहाँ से उन्होंने Hmm. practice किया? So you had some sources if you want to share. Yeah, there are always the famous coaching providers. Like I won't take the names. There like सबका अलग अलग टाइप का mocks होता है. So we like in the accountability group we ensure that सबके पास एक टाइप का mock हो, so that we can share it. Like 15 mocks we can share among each other and know the type of questions that are being set by that particular institute. Like there is a specific institute known, उनका VRC बहुत टेढ़ा वेढ़ा आता है, बहुत difficult होता है वहाँ पे score करना mocks में. Right. So yeah, so all these things don't get demotivated. मेरा भी बहुत खराब मार्क्स आ रहा था, but I was very confident कि कैट ऐसे कभी नहीं जाने वाला है. ये कॉन्फिडेंस रखो and take the exam. And that's what like So for and yeah, you, we took a course. We took a course together. It was it's a very like flagship VRC course provided by that institute. most So people will understand, I guess. yeah, so the teacher Did is it help? really good. It will really help. It will really help. वो मतलब I can give you some pointers about that course. They give you daily एक PDF about a particular article, ask you to read, and वो personally उनका video explanation भेजते हैं. And he gives you daily doses of questions in VA section, verbal ability. Many people ignore that section too till the end of the prep season because उनको पहले पढ़ाई वढ़ाई करके RCs में mark लाना है, because that's a major chunk of the section. Right. So वो मतलब accountability इतना अच्छा बना देते थे कि like those daily doses of questions would keep you up to speed. So that's a very good course you can try. So a lot of people ask me about that course as well, and I recommend them not to go for it for a few reasons. First of Mm-hmm. all, people generally get to have the access of the recordings, and I say कि Mm-hmm. recording से मत करो क्योंकि तुम्हारे doubt solving करने कोई नहीं आने वाला. Exactly, exactly. Secondly, what I believe is that course is for a person who is willing to go from 90 to 99, not for a Hmm. person जिसका 30-40 आ रहा है और उसको 80-85 जाना है. So, Mm-hmm. is it true or is it good for even people who are starting just now from basics? It's really good for people who are starting from basics. पहले मैं तो बोलूँ कि every course like even many self preparatory courses के videos online है, but तुमने बहुत अच्छा point बोला कि doubt clearing के लिए कोई नहीं होता है. So the groups in Telegram and WhatsApp what it is formed, the teachers are very active. वो doubts अच्छे से solve करते हैं. और और every season they come up with a new type of exercise. Like this time he gave कुछ एक था killer cat series, they did that, and every day there was a different type of VA का problem. So it will take only 2 to 3 minutes of your day to solve it. But तुम्हारा practice रह जाता था.
especially someone who is a working professional. As you asked the question, working professional कैसे tackle करेंगे, मेरे लिए बहुत मस्त था. Like I have someone doing my work, मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा है resources. I'll just click on the link, take the test. जो गलत हुआ मैं video explanation देके I will just understand it. It will take 5 to 7 minutes of my day. मेरा practice हो रहा है. So why shouldn't you invest in it? तो वीडियो सोल्यूशंस से ज्यादा मैंने वो एक्सरसाइजेस और डेली कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियो से ज्यादा बेनिफिट हुआ है मेरा. Okay, and let's go to the people who are starting now. So what would you suggest them? How should they go about it? First of all, don't panic. CAT is an exam that you can take within 6 months of preparation easily. You have to not like you have to create your own benchmark. तो पहले एक मॉक दे दो. अंडरस्टैंड मतलब हम बोलते हैं लाइक हमारे औकात जाने के लिए हम एक मॉक टेस्ट दे देते हैं लाइक व्हाट इज आवर लेवल राइट नाउ एंड दैट इज वेयर यू पुट योरसेल्फ इन नाउ कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से ऊंचा उठना है. तो अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस. एक मॉक ले लो, लाइक टेक अ प्रीवियस ईयर कैट 2022 का कोई भी स्लॉट ले लो एंड यू विल अंडरस्टैंड योर स्टैंडर्ड्स राइट नाउ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर वीकनेस. उसी हिसाब से तुम कॉन्ट्स का तो प्रिपरेशन इट्स मोर सिलेबस स्पेसिफिक, यू कैन स्टार्ट इट. So coming to VRC, try to read articles daily. आर्टिकल्स तो मैं बोलूंगी रीडिंग प्रैक्टिस टिल द डी डे करना बहुत जरूरी है बिकॉज तुमको एग्जाम में बैठ के 40 minutes यू हैव टू रीड. यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद टेकिंग द टेस्ट रीडिंग इट. तुम अगर एग्जॉस्ट हो जाओगे 40 minutes VRC के बाद, यू वोंट बी एबल टू डेडिकेट दैट मच एफर्ट्स फॉर और एनर्जी फॉर योर DILR सेक्शन. सो रीडिंग प्रैक्टिस विल, तुमने जो बोला था स्टैमिना, वो बिल्डअप करना है and build it up in such a way such that the stamina peaks during November, not during these few months, and it dips or you're burnt out during November. So read increase the frequency of articles as the months are increasing so that तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाए कि ठीक है लंबा बेसी देर पढ़ना पड़े तो भी इट्स फाइन. मतलब डोंट गेट बर्नट आउट नाउ. अभी ज्यादा करके मतलब मिलेगा कुछ भी नहीं. अभी तुम्हारे मॉक्स में अच्छा आ जाएगा तो भी कुछ no benefit out of it if it is not there during the D days. and D days के पहले मॉक्स लोगे और स्कोर्स कम आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का ड्रॉप हो जाता है. तो सो अभी भी हम मतलब थोड़ा हम्बल रहो, प्रिपेयर करो, रीड आर्टिकल्स. लाइक मैं जैसे द एक्सरसाइज दैट आई शेयर्ड लाइक आई डिड विथ माई फ्रेंड, form accountability groups and start to read from different topics and dedicate a particular week, like Monday only science articles, Tuesday only philosophy के articles. There are several YouTube channels like Think School जहाँ पे बहुत ही complex topics have been explained so well. वो सब देखो so that you will feel easy to understand several of the passages. So तब pardon? Any comments on newspaper reading? Editorial is something जो सब लोग recommend करते हैं. I don't personally recommend because that थोड़ा high level. For someone who is starting sector तो एकदम नहीं. वही मैं जैसे बोली कि don't read the most tough book you have in your house and get demotivated now. अभी जो easy लग रहा है पढ़ो. Editorials will help you for your interviews. Of course it will help you during your interviews. But बहुत sources है जो comfortable है वो करो और उससे थोड़ा plus minus मतलब ऊपर नीचे करने की कोशिश करो. Don't jump to something you haven't tried. Abhi book like you won't be able to read a Shakespeare or Leo Tolstoy right now agar tumhara reading habit acha nahi hai. So start with something simpler. There is nothing wrong with reading a very like basic novel. Great point. But habit banao. Yeah. Have you taken also the daily test of CrackU? No, I haven't ever tried anything of CrackU. Okay. So okay. How many sectionals did you take by the way? In total around? I took around like sectionals in VRC, I took around 20 sectionals. Pretty low, I guess. I started taking sectionals pretty late because मेरा main focus quants और DILR के लिए था till the last what do I say last 2-3 months. So around August and September I started taking sectionals, but मेरा most of my preparation used to happen from mocks and the tests actually from that course that I subscribed to. Right. So there was already sufficient content with me to solve because of that course, so I did not look into anything else. Okay, so we don't have a lot of time. Let's jump to who is starting now. तो उसके लिए भी read, don't be overwhelmed. थोड़ा time बाद sectional दो, full length दो, have an accountability partner and slowly build up your pace. अभी लाके कुछ नहीं उखड़ना है, उस दिन लाना है जिस दिन CAT है. तो main don't compare mock scores and everything and be like तुम अपना मतलब देखो, otherwise you will get demotivated.
So I think the million dollar question right now is what was your test taking strategy? तो तुमने वो 40 मिनट कैसे बाइफरकेट किया, बीए को कितना दिया, आरसी को कितना दिया और क्यों दिया? So tell us about that also. So my strategy is pretty simple. I have to read the my RCs, every RC first. Like, am I audible? Just हाँ, wanted to check. हाँ, या सो मेरा मतलब था कि मेरे लास्ट 15 मिनट या 13 मिनट बचे होंगे, मैं जाऊंगी वीए सेक्शन को, एंड दैट वाज माय लाइक अ टाइमर. लाइक उससे बियॉन्ड आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन आरसी सेक्शन एट ऑल. So I did not actually look into, मेरा reading speed is quite good, so I did not look into the timer during my each individual RCs. But time to time I was checking if the timer for like last 13 to 14 minutes has been breached for VA section. So for me, RCs is more like a more scoring area than VA. So मैंने पहले RCs अच्छे से दिया and everything was good. But this time cat was a bit unpredictable. थोड़ा different VA आया था. Like complete the next sentence, right. वो type. Yeah. So I was aware about it because वो slot 3 में है. तो मेरा my first instinct was to go through the question paper and look at both those questions. So I just looked at it, read it, and I then started RC का section. But तुम ऐसे रखो कि तुम अपना mocks में ना, मतलब when you start taking mocks, take so many mocks that you can try several strategies again and again. कभी आरसी पहले करो, पहले वीए करो, कभी थोड़ा 2 आरसीज करके थोड़ा वीए करो. Try every combination and see what suits you, and then practice the most of it. So that will be my advice. So कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैंने कभी बीए शुरू में किया एंड आरसी बाद में किया एंड इट वर्क, एंड फिर वही मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो वर्कआउट नहीं किया, एंड फिर मैंने आरसी शुरू में किया, वीए बाद में किया, वो वर्कआउट किया, फिर वो नेक्स्ट नहीं किया, तो आई वाज नेवर एबल टू फाइनली डिसाइड कैसा ठीक है ये वर्कआउट कर रहा है. सो तो व्हाट डू यू टेल देम? so like जैसे क्वांट्स में we don't invest more than 3 minutes for a very difficult question, ऐसे होता है ना, मतलब ऐसे VA में भी you should keep a limit of time you invest for a particular RC or a VA का question. So उससे beyond, just don't get attached to it that I had spent this much time, and just move on to the next question. Like mark it for review, come back to it towards the end and do it. अगर VA 2-3 अच्छे से नहीं बन रहा है तो just jump back to the RC. I will suggest तुमको attempts maximize करने हैं with good accuracy. So how many attempts did you do and what was your accuracy around? My accuracy, being frank, I don't remember much, but mine accuracy was good. Like it was around 85 to 90% above. So my VA questions, like this time I attempted lesser. Last year my percentile was higher than this time because थोड़ा सा मतलब confidence मतलब हो गया था सुन के कि cat is different this year. But I attempted lesser questions, but by God's grace only 2 या 3 ही गलत हुए थे, and उसमें से नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले 2 थे. So I'm giving examples. Let's say I come to you and मेरा हमेशा से accuracy खराब रहा है. In fact, my accuracy in CAT was also bad. It was just 55%. ठीक है. Okay. But my attempts rate, because मुझे पता था कि मेरा accuracy खराब है, तो मैं अपना attempts rate बहुत high रखता था. You know, A into B equals to C है तो A को बढ़ा दो और B कम रहे फिर भी C में इफेक्ट आ जाएगा. तो बेसिकली मेरा क्या सजेशन होता है कुछ लोगों की, अगर तुमसे एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही क्लास तक तो अपना अटेम्प्ट रेट बढ़ाओ एंड टेक दैट रिस्क, बिकॉज अगर तुम्हारा एक्यूरेसी भी कम रह गया, अटेम्प्ट रेट भी कम रह गया, तब तो तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता. तो टेक दैट रिस्क की एक्यूरेसी अगर कम है, तुमको पता है सेक्शन वो बढ़ा दो अटेम्प्ट, एंड अगर एक्यूरेसी उस दिन मैजिकली अच्छा हो गया बाय गॉड्स ग्रेस एज यू से, तब तो एकदम ब्यूटीफुल. हाँ. It's a like it's a gamble. Yeah. तो व्हाट वुड यू But सजेस्ट ऑन दिस स्ट्रेटजी फॉर so ये पीपल strategy एबल टू like improve their accuracy? तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली मॉक्स में 5-6 मॉक्स में प्रैक्टिस करके ही तुम जाना चाहिए, बिकॉज इट्स कैट इज वेरी मेक और ब्रेक फॉर सेवरल ऑफ द पीपल. सो आई डोंट थिंक आई कैन टेक द रिस्क ऑफ डूइंग दैट, बट इसमें गट्स लगता है, बहुत ही लगता है ये करने के लिए. बट ऑफकोर्स इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट टिल दी like the end of your prep season, तो ये करना है. बट मैं तो आई विल स्टिक विथ अ थिंग लाइक तुमको 4 क्वेश्चन से आरसी से तो 2 ही करो, मूव ऑन. Don't get attached to the other 2 questions just because तुमने ये आरसी पढ़ने के लिए टाइम लिया है. And try to take more risks in the non-negative वाला questions like the para jumbles and all. And मैं तो para summary इसीलिए बहुत बार skip करती हूँ because वो थोड़ा ज्यादा confusing हो जाता है. So I prefer skipping some questions because मेरा थोड़ा negative marking हो जाता है if I become more confident. So right. So your strategy was कि पहले RCs करो,
most probably you would have done 3 RCs, right? I am not sure. चारों तो नहीं किया होगा. Actually, I did. नहीं, So 27 मिनट में चारों RCs कर लिए. हाँ, I was able to do. I have been always able to do RCs all the time. हो ठीक है. जाता So because of my reading speed. Yeah. let's say if there is someone who cannot manage this much, so what would you suggest them? कि ठीक है, obviously not everyone is as gifted as you, and there are a lot of people, majority of people are the ones जिनका past deed अच्छा नहीं है मेरी तरह. So yeah, I'm suggesting you try to skim the passage. Every passage में 4 questions होते हैं, तो वहां पे 2 या 1 तो होगा जो obviously तुमको दिख ही जाएगा. So there are always some details in your RC जो तुम skip कर सकते हो पढ़ाई के वक्त. Right. So just go from one end to other. The paragraph का gist मिल गया, just scribble in your note कि ये paragraph का ये है, ये paragraph का ये है, and the question जिस paragraph से है वो paragraph खाली 2-3 बार पढ़ के just attempt the question and go to the next RC. This is one strategy. अदरवाइज तुम आरसी के लिए टाइम इन्फ्रेंस एंड ऑल के लिए मतलब अगर डेडिकेट करना चाहते हो, फिनिश द एंटायर सेक्शन. वो जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में आके थोड़ा टेक सम डीप ब्रेथ्स and come back to the question and reread it. Skim karo and reread it and invest time towards the end on those kind of questions. So these two strategies are what always worked for me in RC. मैंने जो टोटल 4 RCs किए थे, उनमें से मैंने कुछ कुछ RCs में every question I did not attempt it because मुझे बहुत रिस्क लगा था. But the obvious questions वो हो जाता था because of my skimming technique. Like I used to skip the obvious parts and like जो ज्यादा कुछ sense नहीं बनता था. Another thing you can do is just read the questions थोड़ा मतलब before attempting the RC, ताकि तुम जान सको कि क्या ज्यादा पूछा है, वो अच्छे से ज्यादा मतलब पढ़ सको तुम during your reading. So that was my approach. मैं पहले first paragraph पूरा पढ़ता था because it establishes the whole thing. फिर बाकी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पूरा एंड बाकी सब स्किम करता था. एंड देन लास्ट पैराग्राफ में भी ऑलमोस्ट स्किम करके मन में ओवरव्यू था कि ठीक है इस बारे में पैराग्राफ में ये सब है. एंड देन आई वेंट टू द क्वेश्चंस. ठीक है कैसे क्वेश्चंस में से पूछे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल वर्क द बेस्ट बिकॉज तुम्हारा जो भी कंक्लूजन टाइप का इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन होता है तो वो तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ से ही बनता है, बिकॉज लास्ट पैराग्राफ एक्चुअली चेंजेस द टोन ऑफ योर पैसेज completely with a closing statement, so that will help you. So last line does change the whole tone. I believe last paragraph का काफी impact पड़ता है. And I think this one way that I told कि as a skimming करके, and I am sure you also told the same thing कि skimming is something that everyone should know and they should try it. तो mock taking strategy में ऐसा होता है कि try different approaches, as you say. Try different approaches, see what suits you well, what works for you, and then get bullish on that approach, right? That's true. So tell me, how did you analyze the mock? मतलब क्या देखते थे mock में? अगर खराब भी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है तो क्या देख रहे हो? So one thing we should before taking a mock be very serious, like you're attempting the CAT exam. थोड़ा seriousness डालने से you will gauge like how I am during these 2 hours and मेरा मतलब confidence कितना ऊपर नीचे होता है during those times. Then after the exam, when the scorecard loads, sometimes or many of the times you are dejected कि यार मतलब VRC का ही होता है, because QA का you already know, DILR की you already know कि I've cracked these sets, converted these formulas and that's it. ये इतना आ जाएगा. मतलब QA and all is not that surprising. VRC is always like a magic scorecard. मतलब कभी कभी पूरा high, कभी कभी सब negative. So just forget it. VRC का section, just reopen it after, take some break, don't go into it again, and then try to attempt it without any timer again. तुम questions मतलब पूरा देखो, मतलब one by one attempt the RCs without setting any timer in the initial days, or most of the time this is your analysis strategy. Attempt it and then one by one RC is over, check the answers. और जिसका हो रहा है ये 2-3 चीजें हैं. पहला है कि जो करेक्ट था तो वो होगा ही करेक्ट. सेकंड, जो पहली बार करेक्ट नहीं था अब करेक्ट हो गया, व्हाट वाज द डिफरेंस? आर यू मोर काम, इसीलिए तुम्हारा हो गया? समथिंग वुड हैव चेंज्ड विद इन दीज आवर्स, वो देखना है. यू एनालाइज दैट कि व्हाई वाज माय सेकंड बेस्ट ऑप्शन द मोस्ट करेक्ट वन, नॉट द फर्स्ट चॉइस दैट आई चूज ड्यूरिंग द टेस्ट. एंड थर्ड, जो अभी भी नहीं हो रहा है, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू इट. वीडियो सोल्यूशन देखो, पैसेज को समझने की कोशिश करो and then move on from it. So Anwesha, I had one question here कि बहुत बार हम लोग भी जैसे करते थे, मैं करता था
I'm sure I don't know how you did it, but मैं लास्ट दिन मॉक विंडो के लास्ट दिन मॉक लेता था एंड नेक्स्ट दिन एनालाइज करता था. बट according to your strategy, it should be like after a break, you should do it. And also the हाँ या questions won't be available. Obviously, उस दिन तो available नहीं होंगे. Next दिन ही होंगे after some time. And फिर उसमें yep. probably एक आंसर तुमको पता है कि which answer is your right answer, right? तो एक खुद से भी बायसनेस आ जाता है ना कि अरे ये तो हम सही मार्क किया. तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम रीडिंग में योर आंसर वुड हैव चेंज्ड अगर तुमको नहीं पता था कि ये राइट आंसर है कि नहीं. दिस इज हाँ मतलब अगर दैट इज करेक्ट बट मोस्ट लाइक हाँ 2-3 सिनेरियोज है मॉक्स का मतलब कभी कभी द नॉन प्रॉक्टेड मॉक्स का उसी दिन यू कैन एनालाइज इट. मैंने उसके रेफरेंस में बोला था द वंस यू टेक इन द विंडो ट्राई टू डू व्हाट यू हैव सेड लाइक टेक इट एज क्लोज एज पॉसिबल कि जितना जल्दी यू गेट योर हैंड्स ऑन द सोल्यूशन. दैट विल रियली हेल्प यू क्योंकि मेमोरी अच्छा रहता है टेस्ट का वाइल एनालाइजिंग इट. तो यू नो व्हाट इज रॉन्ग यू नो व्हाट इज राइट. बायसनेस के साथ तुम वापस उसको अटेम्प्ट करने जाओ और लाइक तुम्हारा क्रॉस है तो यू हैव थ्री और रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तो एक एलिमिनेट हो गया है बिकॉज ऑफ योर मतलब मिस्टेक. सो चूज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3 एंड एनालाइज उसी के हिसाब से कि व्हाई वाज माय सेकंड गेस द बेटर वन कि व्हाट वाज द गैप. also एंड one जो thing सही that है तो सही है यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट कि क्यों और वापस मतलब उसको अटेम्प्ट करोगे. तो मतलब ज्यादा क्रिटिकल मत हो अपने बारे में. लाइक इफ यू हाँ हाँ. टेक द लीप ऑफ फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ कि ठीक है मैंने कुछ सही सोचा होगा तभी है. एंड तुक्केबाजी करना चाहिए. डू यू थिंक मॉक में तुक्काबाजी करना चाहिए? हाँ मॉक इज वेयर यू कैन मॉक में तुम कुछ भी करके देख लो. योर स्ट्रेटेजी इज योर स्ट्रेटेजी. सम पीपल जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड चेक इट फ्रॉम द विच पैराग्राफ इट इज मेंशन्ड एंड अटेम्प्ट इट एंड उनका हो जाता है. बट हो सकता है वो मतलब इट कैन बैकफायर बिकॉज द एंड ऑफ द पैसेज और समथिंग वुड completely चेंज द मीनिंग ऑफ इट. तो योर अप्रोच यू हैव टू स्टिक विथ इट एंड इसीलिए खुद का अप्रोच बनाना है. बाकी किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे. बट तुक्काबाजी जुगाड़ जुगाड़ जैसे कॉन्ट्स के लिए बहुत लोग लगाते हैं कि एमसीक्यूज देख के करते हैं. तो इन्फरेंस एंड ऑल का तुम एमसीक्यूज देख. एलिमिनेशन वर्क्स द बेस्ट. सो दिस ऑप्शन व्हाई इज इट नॉट करेक्ट. एक 1% भी करेक्ट नहीं है तो जस्ट रिमूव इट एंड देन गो टू द नेक्स्ट वन. So basically, as the popular saying goes, rather than selecting the options, eliminate the options. तो एलिमिनेटिंग विल रियली हेल्प यू. एक चीज जो बताओ. मेंशन नहीं है हाँ बोलो. आई वांटेड टू ऐड वन थिंग. हाँ, जो ऑप्शन है sometimes the option has some foreign words from the passages जो mention नहीं है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो मीनिंग सेम है और थोड़ा सा भी अलग है ना. मतलब डोंट बिकम एन ऑथर ड्यूरिंग द एग्जाम की अरे पोएट और राइटर हैज मेंट दिस तो ये भी बोल सकता है. फ्लो में जज्बात में आके नहीं बोलना है. तो ये बोला है ये नया है तो मतलब इट्स रॉन्ग बिकॉज ऐसे उसने बोला नहीं है. इफ ही हैज टॉक्ड अबाउट ब्लैक ही मे और मे नॉट टॉक अबाउट ग्रे एंड व्हाइट. सो डोंट अज्यूम थिंग्स. इन्फर करो मीनिंग निकालो दैट्स डिफरेंट. बट जो ऑब्वियस क्वेश्चन है वहां पे डोंट अज्यूम थिंग्स. सो दिस विल हेल्प यू. तो यही है कि अगर कुछ भी फॉरेन आ गया है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ. इट्स लाइक नहीं है. इट्स इवन मैं एक तरह से वो लड्डू ही दे दिया तुमको हाथ में कि तुमको तुम्हारा एक ऑप्शन तो हम ऐसे ही हटवा दिया. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, परफेक्ट. नाउ देयर वाज वन थिंग दैट आई हैड ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद, एंड समटाइम्स आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल फेस इट, इसकी मॉक्स के ना कभी कभी सोल्यूशन वीडियोस काफी इलॉजिकल है. Even the written answers too are illogical. And then you find yourself in a position where you're not able to figure out the answer yourself, and you're not able to get an answer from the mock video. So what do you do? मैं जैसे कर देता था कि यार पैसेज इग्नोर कर देता था कि ठीक है अब ना मैं कर पा रहा हूँ ना मुझे समझ आ रहा है तो क्यों इतना दिमाग लगाया. देयर आर लॉट ऑफ पैसेजेस दैट आई कैन डू. एक के पीछे पढ़ के फायदा नहीं. बट व्हाट इज योर टेक इन दिस रिगार्ड? आई फील मतलब देर आर सेवरल क्वेश्चंस जो बनाते हैं जस्ट टू एक्सपेरिमेंट like make the students familiar with several types of questions. The coaching institute knowingly do these things so that अगर कुछ बहुत ही गंदा हो जाए हमारे साथ कैट के एग्जाम के दिन we will be acquainted with it. बट एक चीज है जो तुमको समझ नहीं आ रहा है. द मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहाँ पे मॉक्स यू सब्सक्राइब यू हैव अ टेलीग्राम एक्सेस. वहां पे 2-3 लोगों से तो बात होती रहती होगी. तो व्हेन दे टेक इट जस्ट डिस्कस इट विद देम. उनको क्या लग रहा है क्या नहीं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव पीपल टू इंटरेक्ट विद. तो इवन इफ यू आर प्रेपिंग on your own terms just ask someone ki like if anyone has taken just DM this
डोंट गिव अ स्पॉइलर अगर वो विंडो के अंदर है, एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन, तो विद डिस्कशन इट विल मेक सेंस। और समटाइम्स जस्ट डोंट गेट अटैच टू इट, यही सोच लो कि ऐसे नहीं आने वाला है, दिस क्वेश्चन वोंट रिपीट इन कैट, समथिंग न्यू विल कम, सो सो मूविंग अगर ऑन विल हेल्प यू। सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा इवन आफ्टर सीइंग द मॉक वीडियो, लेट इट हम्म। गो। हाँ, लेट इट गो, एंड बट यू विल नो ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन के ऐसे आंसर्स है तो मेरे से नहीं होंगे, तो आई विल बेटर यू स्किप इट, अदरवाइज इट विल बी -1। करेक्ट। सो लॉट ऑफ हम्म पीपल आल्सो फेस प्रॉब्लम इन पैराजम्बल्स कि यार ऑड ऑन आउट तो हम्म फिर भी हो जाते हैं, या तुक्का भी लगा लो, ऑड ऑन आउट में तो फिर हम्म भी 25% चांस है कि तुम्हारा करेक्ट होना ही है, 25 नहीं हम्म 20%। बट पैराजम्बल्स तो भाई एक इधर उधर हुआ गेम खत्म। सो शुड वी इन्वेस्ट टाइम इन पैराजम्बल्स इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड अ लॉट। You should invest time, given that उसमें negative marks नहीं होता है, so you just have a place where you can like invest your time and efforts, and तुमको -1 की मतलब you don't have any fear of it. Another चीज है, पैराजम्बल को अप्रोच करना भी रीडिंग से ही हेल्प होगा, तुम जानोगे कि 4 सेंटेंसेस तुम इंडिविजुअली पढ़ोगे तो तुमको एक कॉमन टॉपिक तो मिल ही जाएगा। सो हैव सम थिंग्स इन माइंड कि अ सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद पर्टिकुलर वर्ड्स, तो वो तो कभी वन में नहीं जाएगा। Otherwise, try to connect two sentences कि two option और four option, fourth will of course always come after two, तो टू और फोर को सेट बना के रख लो, तो वन और थ्री को तुम कहाँ पे इधर उधर कहाँ पे डालोगे, वो वैसे तुम थोड़े थोड़े स्ट्रेटेजीज करके यू कैन रियली गेट कंफर्टेबल विद पैराजम्बल। सो ओनली प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल हेल्प यू। यहाँ पे तो मॉक्स में तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पैराजम्बल्स के टाइम यू गेट एग्जॉस्टेड, तो प्रैक्टिस वाइज मॉक्स में नॉट बी दैट गुड इन द इनिशियल डेज। सो टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट ऑफ द कोचिंग्स यू हैव सब्सक्राइब फॉर, वहां के तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मेरा पैराजम्बल्स का ठीक ही था। एंड हम्म देयर वाज वन स्ट्रेटजी आई यूज जिसमें क्या होता है ना, पैराजम्बल्स में काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस दे देते हैं, तो मैं सिर्फ हम्म शुरू के 5 से 6 वर्ड पढ़ता था हर सेंटेंस हम्म के, ताकि मेरे मन में एक आइडिया हो जाए जो तुमने कहा कि पता है कि ये तो फर्स्ट में नहीं आएगा। एंड कभी कभी तुमको कनेक्टिंग स्टफ मिल जाता है कि ठीक है हम्म ये लास्ट में ही आएगा, ये एंड है तो इससे पहले हो सकता है कुछ ऐसा आए, हम्म बट से पहले कुछ आ, अलग टोन हो, बट के बाद कुछ हम्म अलग है, बट दिस इज नॉट राइट, तो समझ आ गया, बट के बाद अगर कुछ नेगेटिव टोन है तो उससे पहले कुछ पॉजिटिव था। तो वुड ऑल यू दीज रिकमेंड थिंग्स, दिस कि दिस पहले दिस इज कुछ कुछ पढ़ो, शुरू का कुछ हाँ कुछ पढ़ो, हैव अ मेंटल मैप इन योर माइंड, एंड देन पूरा पढ़ो, बिकॉज वंस यू रीड एक साथ पूरा पूरा देन डेफिनेटली तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यू विल गेट ओवरवेल्म। हाँ, या देर आर सम सेवरल टाइम्स, तो मतलब कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो एंड किसी 1960s या कुछ का भी पैराजम्बल डाल देते हैं, तो मतलब समझ में नहीं भी आता है कि क्या वो बता रहे हैं। सो इन दोज टाइम्स कनेक्टिंग सेंटेंसेस की इसके बाद ये आएगा, और सम न्यू फेनोमेनन इज बीइंग डिस्क्राइब, तो उसका एग्जांपल उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि फॉर एग्जांपल दिस, तो तुम वो कनेक्शन निकालो, रीड सेंटेंसेस, फर्स्ट और लास्ट वाले वर्ड्स ज्यादातर पढ़ो एंड फोकस ऑन इट, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी इज क्वाइट व्हाट आई फॉलो एज वेल, सो इट विल बी रियली बेनिफिशियल। Also, there's one thing that I used to do, जैसे तुमने कहा था कि you had people who had all type of mocks हम्म and then you practice, तो मेरे में भी थे कि हमारे पास 3-4 इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स थे। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग डिसाइड करते थे कि आज ये मॉक देना है, एवरीवन यूज्ड टू गिव, एंड देन अपना वीआरसी का स्कोर बताते थे ग्रुप में, एंड रात को वी केम ऑन द मीटिंग, एंड सब लोग अपने अपना एक एक पैराग्राफ उठाए, उन्होंने पैराग्राफ एक्सप्लेन किया किसी को अगर समझ नहीं आया, एंड देन वी वेंट टू द क्वेश्चंस, एंड इन द हम्म क्वेश्चंस जो क्वेश्चन था, पहले अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन समझा देते थे, ताकि सब सेम पेज पे कि ठीक है सबको क्वेश्चन तो समझ आया। एंड देन द पर्सन, लेट्स से इफ देयर आर 4 पीपल, आई यू एंड 2 पीपल, सो इफ आई हैव क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव टू एड्रेस, तो मैं ये नहीं बताता था कि बी क्यों आंसर है, मैं ये बताता था कि ए सी डी आंसर क्यों नहीं है, इवन इफ बी इज रॉन्ग, आई नो बी इज रॉन्ग, बट मेरे को हम्म क्यों लगा, मैंने ए सी डी को कैसे एलिमिनेट किया, एंड इफ हम्म समवन गॉट इट राइट देन दे टेल कि वो लोग बी को कैसे एलिमिनेट किया, एंड बाकी को कैसे एलिमिनेट किया, एंड देन हाउ दे अराइव टू ए, व्हिच आई फेल्ट हम्म क्वाइट हेल्प मी अ लॉट। So, या did you do any kind of practice like this, or would you suggest people to do this kind of practice? Because it does take a lot of commitment and time. हाँ बीच पे आओ तो तुम्हारी थोड़ी बातें होंगी, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू सी दैट पीपल आर परफॉर्मिंग बेटर, कुछ लोग होते हैं जो, हम्म सपोज करो अगर मेरे ग्रुप में यू वुड हैव बीन देयर तो हम तो ऐसे ही मर जाता कि यार तुम्हारा तो हर मॉक में 40-40 आ रहा है और मेरा हम्म कभी 20 आ रहा है कभी 18, तो वुड यू रिकमेंड पीपल टू डू दिस? सो मैं तुम्हारा स्ट्रेटेजी वाज अ बिट व्हाट आई फॉलोड विद माय फ्रेंड जिसके साथ आई यूज्ड टू बी अकाउंटेबल एवरी डे। हम मॉक के बाद वी यूज्ड टू एनालाइज थिंग्स ऑन आवर ओन फर्स्ट,
सो दैट हम अपना टाइम थोड़ा बचा सके, बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो हमारे पास थोड़ा टाइम का लिमिटेशंस था कि हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करें जो हमको डाउट्स है। तो डाउट्स निकालने के लिए पहले थोड़ा पर्सनल वर्क करके वी विल डू, एंड आई विल सॉर्ट आउट क्वेश्चंस, और फिर हम उसको डिस्कस करते थे वीकेंड्स में। बट द वन दैट यू सजेस्टेड विल रियली हेल्प यू अगर तुम मतलब किसी आउटकम के लिए मेंटली अटैच नहीं हो। लाइक यू से दैट यू विल बिकम डीमोटिवेटेड इफ यू सी ऑल योर, तुम्हारे तुमको छोड़ के अगर तीनों अच्छा करने लगे, तो यू विल नॉट, योर स्ट्रेटेजी एंड देयर स्ट्रेटेजी विल नेवर वर्क आफ्टर दैट। तुम तो मतलब यू वोंट बी एबल टू सिट देयर, और वो भी मतलब दे विल हाउ मच दे कैन हेल्प यू बियॉन्ड अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो थोड़ा मतलब पर्सनल वर्क करना बहुत जरूरी है, and take help in the sections that you are having difficulty with, like sorry, the questions that you are having difficulty with, so that you can save time। और थोड़ा मतलब अगर तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो वो भी तुम स्किप कर सकते हो। So a group practice is a good practice unless everyone is evolving together. ऐसा नहीं हो कि कोई हाँ एक हाँ जन दो जन पीछे छोड़ जाए। हाँ, बट लाइक वो जो मतलब उसका अच्छा हो रहा है तो व्हाट वर्क्स फॉर हिम वो तुम तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, कि व्हाट ही डिड डिफरेंटली, बिकॉज वो भी तो कहीं पे तुम्हारी तरह ही था बिफोर, लाइक अ फ्यू वीक्स बैक। सो यू कैन असेस इट। बट समटाइम्स किसी का लक भी होता है कि हाथ का स्पीड बढ़ गया एंड कैट का क्वेश्चंस हो रहा है अच्छे से। बट आई वाज लाइक, मेरा दोस्त वाज अ लाइक, ही इज अ 99 percentiler in DILR. So like I used to never get demotivated. I used to always like ask him to solve the sets in front of me. तुम कैसे अप्रोच करते हो, क्या करते हो? मैं भी उसके सामने VRC ऐसे मतलब आई यूज टू टेक सेक्शनल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ही यूज टू जस्ट ऑब्जर्व इट। सो दीज ऑल स्ट्रेटजीज विल रियली हेल्प इफ यू हैव समवन अ बिट above you in the preparation. So you would suggest कि अगर कोई किसी चीज में अच्छा है so you हम्म should observe them how they are हम्म approaching rather than just asking them because एक टेस्ट जब शुरू होता है तो उनका एक्चुअली में नेचुरल तरीके से जो वो करते हैं वो चलता है क्योंकि बोलने में तो कोई कुछ भी बोल दे आज को तुम भी बोल दो हम्म। कि यू डू दिस बट कल को हम हाँ मतलब सेक्शन में देखा यू आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली सो आई नो कि there's a difference between saying and doing right. दैट्स ट्रू। एंड एक चीज है ना, मतलब इफ आई अटेम्प्ट कैट दिस ईयर विद द सेम स्ट्रेटजी, हो सकता है मेरा इस बार खराब हो जाए। मतलब इट यू नेवर नो, डी डे इज वेरी डिफरेंट। बट तुमको वहां तक कॉन्फिडेंस बढ़ाते लेने जाना है 27th November और द लास्ट संडे ऑफ द नवंबर को। मतलब यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि यार मैंने प्रेप अच्छे से किया है। तो मॉक्स कोर्स एक्चुअली हेल्प यू विद दैट कि यार मेरे मॉक्स अच्छे हुए तो मेरा हो जाएगा, इतना अच्छा तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा पर्सनल तुम अपना एक यू बिल्ड अ शेल अराउंड यू, लाइक ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स ऑन योर ओन, ट्राई टू अप्रोच थिंग्स ऑन योर ओन। अगर नहीं हो रहा है तो लाइक रीच आउट टू पीपल। So this is actually में like I can see मैंने मेरे में वो सारे लक्षण थे जो एक 99% टैलेंट में है बस मैं परसेंटाइल उतना नहीं था. But you have gone up. Your graph has gone up tremendously from your previous CAT attempt to this attempt. Yeah, So okay. you did something right in that way. हाँ बट मैं वीआर से सेम था पिछले बार और इस बार दोनों सेम परसेंटाइल बिकॉज माय स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी ऊपर नहीं हो रही तो अटेम्प्ट रेट ऊपर करो एंड ऑब्वियसली द Hmm. गैम्बल. But I think this is a very insightful conversation for people who are starting out, who have done a bit and they're struggling. I'll just sum it up. Okay. So we talked first about how things started for you, and then what was your क्या बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी. मैं एक चीज और बता दो पहले बिफोर वी सम अप दैट व्हाट डिड यू डू फॉर द डी डे लाइक डिड यू स्टॉप गिविंग मॉक्स अ वीक बैक कि तुमने मॉक्स दिया लास्ट तक दिया एक दो दिन पहले तक या मतलब there are a lot of people who are confused. तो वो क्या See, किया. हाँ तो देयर वाज मेनी मेनी पीपल वर हैविंग डिफरेंट ट्रेंड्स। एक बंदा तो मतलब ट्विटर में एवरीडे मॉक दे रहा था, ही वाज पोस्टिंग हिज स्कोर एंड इट वाज गोइंग वेल फॉर हिम। समवन वाज टेकिंग मॉक every 2 alternate hour or something like that. So I thought that I'm not going to drain myself right now. It will be totally difficult. अगर बहुत अच्छा आ जाएगा भी तो क्या है, मेरे कैट में ही तो मतलब आना है। और बहुत बुरा आ जाएगा तो मेरा कैट का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। सो 5 days बिफोर माई कैट एग्जाम आई टुक माई लास्ट मॉक। इट वॉज एवरेज, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ज्यादा था, बट नॉट व्हाट आई वांटेड। एंड आई स्टॉप देयर बिकॉज और अभी आई हैव टू क्लियर माई ब्रेन। सो रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज एंड like the bookmarked questions, revisiting them, and like I was reading passages and paragraph and articles, random things that I enjoyed reading instead of difficult ones at that time.
Okay, But interesting. yeah, before the exam, before the like the penultimate day, I will suggest you to chill because तुम रात में like before, if it is a morning slot, by evening 6 to 7 p.m. you should be done with your books or everything and just go to sleep because कुछ changes नहीं होने वाले हैं because of you reading. अगर तुम रात भर पढ़ने बैठ जाओ तो और भी गंदा हो जाएगा क्या? Here I would like to share an experience. तो मैं कैट से पास मेरा कैट हाँ सिम कैट 15 was my last सिम कैट लाइक मॉक एंड मेरा उसमें DLR में 1 आया था एंड टोटल आई गॉट Okay. सम 70 percentile. So it was quite bad for a person, right? So who is repeating an 2 year gap. तो मैंने फिर वही सोचा जो तुमने सोचा कि यार अब छोड़ो जो होगा देखा जाएगा हम्म, एंड मैंने पूरा चिल मारा. एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं मेला घूम रहा था बट हाँ यार. अचानक से मुझे लगा कि बहुत टाइम से मेरा ओहो. माइंड को वो वार्म अप नहीं मिला है कि हम 2 घंटा बैठ पाए. तो मैंने बस हम्म. रैंडमली एक ठो मॉक खोला, उसको पूरा 2 घंटा दिया एंड फिर बिना स्कोर देखे बंद कर दिया क्योंकि बस मेरा माइंड वार्म अप हो जाए कि हम सुबह वो 2 घंटा हाँ का हाँ. दिन में रह सके. तो That's true. शायद शायद थोड़ा हेल्प हुआ कि भाई ठीक है अगर हम नींद में भी है वहां पे नींद खुल जाए तो एक होता है ना कि तुम वार्म अप है. हम्म. तो आई वुड सजेस्ट पीपल टू नॉट कंप्लीटली लूज टच. हम्म. या तो पूरा रीडिंग अरे करते रहो, कुछ ना कुछ सही है मॉक मतलब. करते रहो. और एक स्ट्रेटेजी है, तुमको जब से स्लॉट मिल गया ना उसी टाइम में मॉक लिखना शुरू कर दो. बहुत टफ. मेरे को स्लॉट 3 मिला था तो आई यूज टू ऑलवेज गेट स्लीपी ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आई ट्राई टू लाइक टेक लेस ब्रेक्स, आफ्टरनून नैप्स बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मॉक्स ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आई ट्राई टू यूज्ड टू गेट वेक अप एडजस्टेड टू दैट योर वन. स्लॉट. और मैं स्लॉट 30 में तो इट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर मी टू इवन शिफ्ट माय टाइमिंग्स एंड आई बिलीव अगर मैं मॉर्निंग स्लॉट आता तो तब तो मेरा कैट खत्म ही था. हाँ मतलब दिस इज व्हाट आई एम आल्सो अ पर्सन हु लाइक्स टू स्टे अप एट नाइट. और मेरा प्रोडक्टिविटी आफ्टरनून को ही मतलब ज्यादा हाई एम्पलीफाइड हो जाता है. तो मॉर्निंग स्लॉट मेरा मतलब आई एम फॉर्चुनेट, 4 बार कैट में एक बार भी नहीं आया है. ऑल द टाइम आई एम अ स्लॉट 3 और द लास्ट स्लॉट पर्सन. मेरा भी तीनों बार स्लॉट 2 था. Some algorithm that is constant all the time. I think God's algorithm is there. See why. So I think we discussed upon your D-data thing. We Hmm. discussed upon your mocks, how you analyze mocks. What were your sources of reading? If you can reiterate your sources once again for people to recall. Some start with novels, easy to read ones. Try to read one novel in 1.5 month or 1 month initially. Then articles, like you can try editorials, but if it is very difficult for you, start with easy to read articles on the internet, Times of India ke some articles or Economic Times, or then go to sites like Aeon. वहाँ पे different different categories के articles आते हैं like philosophy, sociology, science, literature. So pick up themes every day and don't get stuck with one particular theme which you enjoy. Get uncomfortable with the themes in the initial days of your preparation. एंड अगर तुमको लाइक फिलोसफी में सोक्रेटिस एंड ऑल समझ नहीं आ रहा है तो थिंक स्कूल वगैरह के वीडियोस देख के थोड़ा प्लेलिस्ट एंड ऑल गेट acquainted with those people and their way of thinking, and that will work with you. So if I have to sum up, read a book, then Hmm. go on to read articles, small Hmm. articles, easy one, then go on to read difficult ones. Probably a tutorial which will also help you in your interviews. Hmm. If you're not able to understand something, find things on YouTube and try to understand, make sense of it, and then read. But don't stop Yeah. reading. Hmm. ठीक है? तो डेली मतलब ऐसे रखो कि some involuntary response that you pull out your phone or your laptop and you just read an article per day, an article per day. Great. Also, we discussed on mocks, reading, D-Day, your approach, your test taking strategy. ठीक है? Is there anything we missed out? Okay, I think we missed out on one thing. What there are a lot of people who think कि vocab is a very big issue. Also grammar. And this is Hmm. a very big spoken about topic. कि भाई vocab सही नहीं हुआ तो VARC सही नहीं होगा. What is your take देखो on that? देखो जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट आई लाइक टू राइट बट मैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिखती हूँ अपने राइटअप्स में बिकॉज मेरे को भी मतलब आई लव सिंपल इंग्लिश. बट जो समझ नहीं आ रहा है तो दिस इज वेर योर इन्फ्लुएंस विल हेल्प यू, व्हाई दिस वर्ड इज प्लेस्ड इन द पैसेज. थोड़ा मतलब दिमाग लगाओ while you're reading a normal book. वो जब a foreign word is
found, don't try to immediately take up the dictionary and find the meaning. पूरा पढ़ो, उसके बाद सोचो कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है. That may help you. तुम अगर उससे थोड़ा सा भी रिलेटेड कुछ भी, मतलब if a word melancholy is there and starting से ही मतलब author is very sad, वो कुछ गाना वाना लिख रहा है and all, तुम थीम समझ गए हो तो melancholy must be something sad. This is how you can start with your vocab. Otherwise you may try to like read many articles, and कभी कभी होता है कुछ कुछ वर्ड्स बहुत बार रिपीट होते हैं तो याद रह जाएगा. डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू, लाइक मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था वो जो वर्ड पावर मेड इजी, बट आई कुड नॉट फाइंड द टाइम टू गो थ्रू दैट बुक. इट्स अ लॉट. इतना नहीं होता यार, याद भी नहीं रहता, उतना टाइम भी नहीं होता. एंड वंस you score bad in any other section, उस पे ध्यान चला जाता है. There are so different, not only CAT, you have ZAT, you have IFT, so many different exams with strategies, and बहुत सारा है syllabus complete करने का. You cannot dedicate a lot of time just मैं vocab ही पढ़ूंगा 2 घंटा every day. Right. So from this, I will ask you some topics and just rate them out of 10, 10 being the highest, 1 being the lowest, for importance. ठीक है. Reading. Reading 9 to 10. ठीक है. Grammar knowledge. Grammar, like I'll rate it 8, 7 or 8, because grammar तुमको अभी error finding and ये सब तो नहीं है ना, मतलब ये section में, तो that will not, मतलब तुम अभी बैठ के nouns and ये सब मत पढ़ना, because मतलब बेसिक इंग्लिश नॉलेज तो होगा ही ना. मतलब ग्रामर का नॉलेज कितना जरूरी है तुम्हारा वीआरसी सेक्शन एक्सेल करने के लिए. सो रेट इट आउट ऑफ 10. नहीं, नो आई डोंट थिंक सो दैट मच. 7 to 8 out of 10 I'll dedicate. मतलब I don't know a lot of things. मुझे सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस ये सब पता है, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है पता है, बट बियॉन्ड इट मुझे अगर तुम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पूछोगे तो आई, मतलब जीमैट अगर देने के लिए बोलोगे तो मेरे से नहीं होगा, वो बहुत डिफिकल्ट है. उसके लिए अलग लेवल का प्रिपरेशन चाहिए. कैट इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पढ़ के समझ रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, तो डोंट स्पेंड टाइम ऑन लर्निंग व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन. तो बेसिकली 3-4 ही रखो, मतलब ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो भी इंसान निकाल लेगा. हाँ हाँ, मतलब ग्रामर मतलब बेसिक्स, मतलब सेंटेंस का मतलब कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जो पैरा जम्बल्स एंड ऑल में हेल्प करेगा तुमको, कनेक्टर वर्ड्स, ये सब तो रहना है. मतलब दिस इज व्हाट यू डेवलप बाय रीडिंग पैसेजेस इंस्टेड ऑफ लर्निंग थ्योरी. सो 5 out of 5 की 6 out of 10. ठीक है. एंड vocab is important. It will give you an edge if it is your it will give you an edge, but don't dedicate like 6 to 7 out of 10, but don't dedicate a lot of time to read. You're asking really difficult questions. Critical reasoning, it's required 8 to 9. So for you it was always reading at the top. Reading as well as writing. Like तुम अगर बहुत टाइम है तो आर्टिकल पढ़ के खुद भी आर्टिकुलेट करके समरी लिखना शुरू करोगे भी, तुम्हारा भी ये बहुत आरसी बहुत अच्छा हो जाएगा. Okay. I think I have got answers to most of the questions. Is there anything that I missed you wanted to add or you had in mind कि ये चीज तो बताना है which was not touched upon? So just one thing I've missed out on talking about working professional वाला part थोड़ा सा. तो if you are commuting to your office, spend the time wisely, read articles during that time. When you come back in the day, reflect back on the article. थोड़ा breaks and all मिल रहा है तो try to sneak in a bit, and have weekly and monthly goals. Weekly goals में मतलब it is sacrosanct, try to stick with it. अगर वो हो रहा है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो एक मंथ के एंड में तुमको उसको कंप्लीट करना है. बियॉन्ड इट इट विल बिकम वेरी टेरिबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. एंड हो रहा है तो 2-3 छुट्टी ले लो पढ़ने के लिए, अगर इफ अ लॉट ऑफ बैकलॉग इज देयर. मतलब हाँ, मतलब टेक लीव्स. आई एम नॉट बी, इट्स नॉट अनएथिकल, नॉट taking leaves is not unethical. Like you can plan your leaves, inform them a day in a month, like that, to cover up your backlog will really help you. So for working professionals, take leaves, plan your leaves in a better way and take leaves, and also use the time, the commutation time, transportation time in a way कि उससे कुछ productive निकले. Obviously LRDI और QA तो हो नहीं सकता ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे, तो VARC is only something VARC is very very helpful. Yeah. To tell only 3 things
अब लास्ट 3 चीज, कुछ कोई पूरा वीडियो नहीं देखना चाहता, वो बस लास्ट में ये 3 चीज सुन के चला गया, तो दैट वुड बी more than enough to you know get the gist most. So what are the 3 things, the holy grail that you will say? So if you're starting with the VRC section, first get comfortable with uncomfortable topics. If you haven't studied a particular subject in your grad, try to read more about it. Second, try to understand or skim through the passages. Avoid reading things which are not necessary. And third, practice a lot of mocks and take double the amount of time to analyze it. And all the things, the strategy and everything is there in the video, guys. If you haven't seen it, बीच में time stamps में जाके देख लेना how to analyze, how she analyzed. But it was wonderful getting it all from you, Anwesha. I'm sure Thank you for people will having me. get a lot of clarity, because होता है टीचर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव नेसेसरी है, आई बिलीव, क्योंकि हम लोग को पता है कि व्हाट इज रियलिस्टिक एंड व्हाट इज नॉट. Yeah. I think sometimes teacher tends to say something which might be relevant for their time, but abhi nahi hai. So that is this was the aim. And can you tell us, like, lastly, about the converts you had this season? So I converted. I'm Bangalore, Lucknow. I'm Kozhikode, Indore, and SPJ JMR's the business management and the information management course, NITI Mumbai, and IIT Bombay, as well as the CAP IMs. That's all, I guess. And did you take And any yeah, MDI Gurgaon also. Yeah. did you take any other exams apart from CAT? No, I wasn't invested in. I was like totally into cat only. So I did not. I tried. I never took like JAT seriously, but it wasn't that good for me. But cat was my only thing. Otherwise, I would have tried for GMAT this year. Oh, तो वो Yeah. hard thinking phase आने ही वाला था, CAT नहीं निकला. Mm, But it was wonderful conversating with you, thank you. Anwesha. I'm sure people Thank will you. get a lot of benefits. Thank you so Yeah. much for spending time. I wish you luck for all your time in Bangalore. I'm sure you Wish you luck in I am Kozhikode. Yeah. thank you. I'm sure you'll try to make the most out of it. And it is definitely Yeah. a beautiful place, the place to be, as we have seen in Mm. Three Idiots. So, but I would say Kozhikode is much better. Of course, it's a beautiful campus. So we Yeah. have to. We will make the most of our MBA lives. Yeah. Yes, I'm sure सबसे ज्यादा निचोड़ पाए इस 2 साल में, इतना पैसा भी लगा Mm. तो बनता ही है. Of course, we are investing a lot. Definitely यार, बहुत बड़ा लोन है. So all the best for your journey. I will Thank you, Iman. give your blog link in the description so that people can see कैसा लिखना है. I think you even post on Twitter about VARC, so Yeah. they can get some value from it. तो आपका Twitter link भी डाल देंगे, and definitely Okay, okay. deserve it, because if you're giving value here, I'm sure you'll give value there as well. And Yeah. Otherwise, you can connect with me on LinkedIn. So that would be very easy for me to reply there. and if by God's grace ये video लोग देखे ज्यादा and they connect Hmm. with you, then please WhatsApp पे मुझ कुछ मत बोलना. You have signed it up yourself. Yeah, sure. चलो guys, Okay. see you. Chalo, bye, Heman. Bye bye. Yeah, bye everyone. Bye. Take care.